Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examination, that is DBT JRF. So as I've already posted one video yesterday that DBT JRF and CSIR will be merged in the upcoming time. So this is the last attempt of DBT JRF. So you have to give your best in order to get selected. So this is in continuation with the video of what I have posted yesterday, chromatography part 1, and this is in continuation with that. So this is the 16th question. Which technique would you use to purify an antibody? So I have already mentioned about the affinity chromatography. Any exam, if you are giving GATE exam or if you are giving CSIR, DBT, ICMR or whatever exam or any entrance exam. So this chromatography topic is very important. The different type of chromatography, for what purpose you will choose the affinity chromatography, for what purpose you will choose the ion exchange, for what purpose you will choose the gel filtration or the size exclusion chromatography. So all these techniques are very important. So if we talk about the AC, that is the affinity chromatography, so it is a highly specific separation technique which is used to purify biomolecule based on their unique interaction. अगर हमें पता है कि अगर हमें जिस मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी प्रोटीन को सेपरेट आउट करना है दैट इज स्पेसिफिक, यानी कि वो स्पेसिफिकली इसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ये एनालाइट इसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, देन ओनली दिस सेपरेशन विल बी अचीव्ड. So this type of separation is only possible in affinity chromatography. So अगर आपको antibody purify करना हो, so the right technique is affinity chromatography. So moving on to next question. In HPLC, increasing the flow rate generally do what? So in HPLC, increasing the flow rate will generally increase the resolution, decrease resolution, does not affect resolution or stop separation. So if you will, so if in HPLC, if you are increasing the flow rate, then it can shorten the analysis time. यानी जैसे जैसे flow rate बढ़ेगा, जो analysis time है वो घटेगा, क्योंकि जितनी rapidly आप चीज़ों को करना चाहेंगे उतने error के chances बढ़ेंगे. As simple as that. कोई भी काम अगर आप हड़बड़ी में करते हो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वही काम अगर आप बहुत पीस ऑफ माइंड से, बहुत आराम से करते हैं, एक नॉर्मल पेस से करते हैं, सो आपका जो उसमें एनालिसिस टाइम है वो बढ़ जाता है एंड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है. सो इफ in HPLC you will increase the flow rate, it will decrease the resolution. So high flow rate can cause poor interaction between analyte and stationary phase, reducing the resolution. So now next question. Chiral chromatography separate compound based on. So chiral chromatography के ऊपर भी questions बहुत ज़्यादा आता है. So chiral chromatography is a technique which is used to separate enantiomers of a compound. Enantiomers को separate करने के लिए ये technique use होता है. So it is the So enantiomers are optical isomers. So chiral chromatography separate enantiomers which are mirror image isomers. So moving on to the next question. In gel filtration chromatography, the void volume refers to what? So gel filtration या size exclusion का मैंने बहुत बार बताया है. So gel filtration chromatography जो है वो volume, अगर हम बात करें gel filtration में, so void volume which is also known as a dead volume, यानी void volume को हम dead volume भी कहते हैं, and it refers to the total volume of a mobile phase contained within the column. यानी एक column में कितना mobile phase है, that is known as the void volume. It exclude the volume occupied by the stationary phase article, यानी solely mobile phase कितना occupy कर रहा है उसे हम कहते हैं void volume. So it will be obviously the volume outside the beads, because beads are the stationary phase. So VO is the volume that is not accessible to molecules that enters the pores. So I hope कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा. void volume क्या होता है? The total volume of only the mobile phase contained within the column. Now moving on to the next question. Which factor does not affect chromatographic separation? Column temperature, flow rate, mobile phase composition, detector sensitivity. So column का temperature भी obviously करेगा,
और फ्लो रेट भी करेगा, मोबाइल फेज भी करेगा। डिटेक्टर सेंसिटिविटी अफेक्ट्स डिटेक्शन नॉट द सेपरेशन एफिशिएंसी। यानी एकदम इसको ऑड वन आउट से कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कि डिटेक्टर का काम क्या है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसे डिटेक्ट करना, नॉट कि जो आउटपुट आ रहा है उसको किसी तरह से हिंडर करना। सो अगर हमारे डिटेक्टर में किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई लिमिटेशन है, तो हमारे आउटपुट लेने के टाइम पे फॉल्ट आएगा, ना कि एक्चुअल सेपरेशन में। सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी डी, डिटेक्टर सेंसिटिविटी. Now next question. An ion exchange chromatography protein with a net positive charge at pH 7 would bind to what? A cation exchanger, an ion exchanger, both, neither. So protein with a positive charge will bind to a negatively charged cation exchanger. So right answer for this question will be cation exchanger. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये वाला जो एनायनिक एक्सचेंजर है, जैसा कि हमें पता है कि जो एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, केटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर हम लोग बात करें एनायनिक एक्सचेंजर की, सो नेगेटिवली चार्ज एनालाइट विल बी अट्रैक्टेड टू दी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस। जैसे कि इसके पास पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो एनायन अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड केटायनिक एक्सचेंजर विल डू व्हाट, इट विल अट्रैक्ट दी केटायन, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास नेगेटिव सरफेस है। तो ऑपोजिट इंटरेक्शन आपको याद रखना, अगर एनायन है तो वो क्या करेगा, एनायनिक एक्सचेंजर क्या करेगा, एनायन को एक्सचेंज करेगा, केटायनिक एक्सचेंजर क्या करेगा, केटायन को एक्सचेंज करेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which factor primarily governs the separation of molecules in gas chromatography? Charge of the molecules, molecular size, volatility, affinity of the column material. So हमने कल ही पढ़ा था, it is the volatility यानी the ability to form vapors, उसी के बेसिस पर सेपरेशन होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में. So the right answer for this question will be option C. Now next question. Which type of chromatography is best suited to separate DNA fragment based on size? Affinity chromatography, gel filtration chromatography, SDS page, agarose gel chromatography. So कौन सा chromatography है जो DNA fragments को separate कर सकता है on the basis of size? So obviously it is the agarose gel electrophoresis, because agarose gel will work as a molecular sieve to सेपरेट डीएनए बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो पीछे ही रह जाएगा एंड जो लाइट वेट होगा वो आगे की तरफ माइग्रेट करेगा। सो द बेस्ट विल बी अगरोस जेल क्रोमेटोग्राफी. Now next question, which interaction is strongest in affinity chromatography? Ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interaction, specific ligand receptor binding. So हमने बात किया था अभी जस्ट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, एसी की. सो इसमें हम लोग ने बात किया था कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है. सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि ये सारे जो वीक इंटरेक्शंस हैं ये इजीली क्या हो सकते हैं, फॉल ऑफ हो सकते हैं. बट अगर स्पेसिफिक लिगैंड रिसेप्टर बाइंडिंग है, सो इट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द वीक इंटरेक्शन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The partition coefficient in partition chromatography is defined as mobile phase concentration upon stationary phase concentration, stationary phase concentration upon mobile phase concentration, solute upon solvent, solution migration rate upon solvent migration rate. So the partition coefficient in partition chromatography, जो उसका करेक्ट फॉर्मूला है वो है, इट इज द स्टेशनरी फेज concentration upon the mobile phase concentration. So the K is equals to concentration of the solute in stationary phase upon the concentration in mobile phase. So the right answer will be option B. Now next question. A researcher uses reverse phase HPLC to separate two hydrophobic peptides but find poor resolution. Which method can improve the separation? Increasing mobile phase polarity, increase mobile phase polarity, use large stationary phase particle, or increasing the फ्लो रेट. सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं CSIR में भी एंड आपको DBT में भी देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा है
रिवर्स फेज HPLC का। सो यहाँ पे हमने बात किया था, कल ही मैंने बताया था कल के, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों पार्ट देखिए, बिकॉज इन कंटिन्यूएशन है सारे वीडियोस। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपको सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। Yesterday we have talked about that the stationary phase is a non-polar in case of reverse phase HPLC. जो स्टेशनरी फेज है इट इज नॉन पोलर इन केस ऑफ रिवर्स फेज HPLC। सो अगर हमारा रेजोल्यूशन बहुत ही पुअर आ रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन इंक्रीज द मोबाइल फेज पोलैरिटी इन ऑर्डर टू गेट मोर resolution. So increasing the polarity enhances differential interaction with the hydrophobic stationary phase. So इससे हमारा रेजोल्यूशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग द मोबाइल फेज पोलैरिटी, नॉट द स्टेशनरी फेज, बिकॉज स्टेशनरी फेज क्या होता है, नॉन पोलर होता है रिवर्स फेज HPLC में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A. Now moving on to the next question. In size exclusion chromatography, a molecule smaller than the pore size will elute slower because it will be entrapped in the beads. जितना छोटा, जैसे मैंने बताया ये छोटा है, ये मीडियम है और ये बड़ा है, तो ये तो कॉलम में जो भी बीट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, मीडियम वाला सेकंड आएगा, सबसे छोटा थर्ड आएगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन करके आएगा तो बहुत स्लो माइग्रेट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of chromatography is most commonly used for desalting protein? So desalting of protein is achieved by size exclusion chromatography, जिसमें क्या होता है, small ions remove हो जाते हैं and retaining the larger protein molecules done via gel filtration. So the right answer for this question is option B. Now next question, a hydrophilic stationary phase and a non-polar mobile phase are a features of normal phase HPLC. Because अभी just हमने पढ़ा था कि हमारा जो नॉन पोलर होता है वो होता है स्टेशनरी फेज, किसमें, रिवर्स फेज HPLC में। नॉन पोलर होता है स्टेशनरी फेज, तो नॉन पोलर है, यहाँ पे बोला है हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी फेज, तो हाइड्रोफिलिक किस में होगा, नॉर्मल फेज HPLC में, और नॉन पोलर मोबाइल फेज किस में होगा, वो होगा नॉर्मल फेज, यानी इसका ऑपोजिट। सो राइट आंसर विल बी chromatography. Now last question of the session. In HPLC, a decrease in particle size of stationary phase leads to lower back pressure, higher resolution, decreased sensitivity, decreased separation efficiency. So अगर पार्टिकल साइज हमारे स्टेशनरी फेज का कम है, डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज विल लीड टू हायर रेजोल्यूशन, बिकॉज smaller particle size will increase the surface area and it will improve the separation technique, and it will also increase the back pressure को भी increase करेगा। so the right answer will be high resolution. so this is all for today. अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगे हो, do hit the like button and subscribe button, and please share the channel as much as possible to make a larger family. Thank you so much for watching.